Hello everyone and a very warm welcome. So this is 30 days, 30 questions J Advanced series, and let us see what is the question for today. Let f be a function. Let f be a function having a continuous derivative. Let f be a function having a continuous derivative on closed interval 0 to 1. And with the property that 0 is less than f dash of x is less than or equals to 1. Also suppose that f of 0 is equal to 0. Prove that integral 0 to 1 fx dx whole square is greater than or equals to integral 0 to 1 fx ka whole cube dx. Okay, we have to prove this result in the question. That means again dikh to raha hai integration, but we will have to check whether actual integration is there or not, right? क्या करें solve करने के लिए? Let us start solving the question. हम इस question को solve करने के लिए क्या करेंगे? We need to prove this result that integral 0 to 1 fx dx का जो whole square है, it is greater than or equals to right hand side. So for solving the question, first of all, we are going to read it once again. They have given me a function which is continuous derivative, which has a continuous derivative in closed interval 0 to 1, and it also has this property. यानी जो हमारे पास function है ना, it satisfies this condition. Also suppose that f of 0 0 है, so what we need to prove is left hand side this expression is greater than or equals to right hand side. कैसे prove करेंगे? Prove करने के लिए देखो, I'm going to consider a new function f of t. ठीक है, एक नया function लिखते हैं f of t by taking all the terms on one side and especially keeping the upper limit as t. यानी ये हमारे पास question बन जाएगा कि this is f of t is equals to integral 0 to t f of x dx का whole square minus integral 0 to t f of x whole cube dx. ठीक है, and t is belonging to closed interval 0 to 1 closed. T is belonging to closed interval 0 to 1 closed. Now what I'm going to do is I just want to prove that f of t is greater than or equals to 0 for every t belonging to this interval. अगर ये हमने prove कर दिया तो automatically f of 1 वाला condition satisfy हो जाएगा. Correct? अभी हम इसे किस तरह prove कर सकते हैं? Prove करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया? मैंने check किया f of 0 का value which is turning out to be 0. Right? f of 0 0 आ रहा है. So I want to prove that f of t is a increasing function in this interval. If I can prove that f of t is increasing, then automatically f of t की value f of 0 से तो बड़ी आएगी, because you are keeping the values of t greater than 0. Correct? F of 0 0 है. I want to prove that f of t is positive for every t belonging to 0 to 1. How I am trying to proceed here is, because f0 0 hai, if I can prove that f of t is increasing function, the question will be solved. So I'm just interested in proving that the function f of t is a increasing function. Increasing function prove करने का तरीका क्या होगा कि आप इसका derivative लोगे. And yes, Leibniz rule tells us how to take the derivative. So I'm going to differentiate both the sides. Right hand side 2 times integral 0 to t f of x dx multiplied by f of t. Using the Leibniz rule, I got the derivative this one minus f of t ka whole cube. That means you can take 2f of t common and you are left out with 0 to t f of x dx minus f squared t. Correct? This is what we are left out with. Okay, now we know that f of t is positive. It is given in the question. भाई f dash of t को positive ही तो prove करना है. तो f dash t तो already, small f dash t तो already positive है. That means ये outside वाला factor is positive. So I can write it as positive. But I don't know about the sign of this expression. So I said, okay, fine. Let us take it as a new function g of t and try to get its sign as positive. If I can prove that this expression has a positive sign, the question will be over, right? तो इसीलिए अब मैं g of t के साथ आगे चलूंगी.
यानी क्वेश्चन में दिख तो रहा है इंटीग्रल, बट वी आर सॉल्विंग इट यूजिंग द लिबनीज रूल, यानी रिपीटेडली वी आर डिफरेंशिएटिंग एंड ट्राइंग टू गेट द आंसर। तो अब अगले स्टेप में मैं क्या करने जा रही हूँ, जी ऑफ टी को मैंने लिखा इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस एफ स्क्वायर टी। व्हाट आई वांट टू प्रूव इज, आई वांट टू प्रूव दैट जी ऑफ टी इज पॉजिटिव, है ना। हमें इसे पॉजिटिव प्रूव करना है किस इंटरवल में, इन क्लोज्ड इंटरवल 0 टू 1। कैसे प्रूव करेंगे, प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई कैलकुलेटेड जी ऑफ 0। जी ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0। व्हाई इट इज 0, बिकॉज इन द क्वेश्चन दे हैव प्रोवाइडेड मी द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0 इज 0, और ये तो 0 बनी जाएगा। Okay, if you want to prove that g of t is positive in this interval and you are getting g of 0 is 0, then it is sufficient to prove, what we can prove here, that g of t is again increasing function. यानी अगर gt increasing function prove हो गया तो automatically g positive values लेने लग जाएगा, correct? अभी क्या करें, gt पे concentrate करते हैं, इसका derivative निकालेंगे। g dash of t मैंने calculate करना शुरू किया, which turns out to be f of t minus 2 into f dash of t into f of t, right? This is what we will be getting. Okay, next what? अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इन द नेक्स्ट स्टेप लेट मी जस्ट चेक, मैंने शायद कोई 2 का फैक्टर मिस किया है। यस, ये जो 2 है ये कॉमन नहीं आ रहा, ये 2 यहाँ पर आएगा, करेक्ट। सो इसीलिए हमारे पास ये टर्म 2 बन जाएगी एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम ट्वाइस, यानी अब मैं 2ft कॉमन ले सकती हूँ एंड वी आर लेफ्ट आउट विद 1 minus f dash of t. We just need to find out whether the sign of g dash of t is positive or not. Is it possible for us to identify the sign of this? This is what I need to check. तो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f dash of t मुझे पॉजिटिव और 1 से छोटा दिया गया है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई कैन राइट इट इज पॉजिटिव। व्हाट डू यू से अबाउट f of t? सो f of t की अगर बात करें तो उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इट इज अ कंटीन्यूअस डेरिवेटिव ऑन 0 to 1, राइट? एक फंक्शन है जो 0 to 1 में डिफाइंड है, यानी ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यूज ही ले रहा है। So f of t is already positive. This expression has become positive. It indicates that g dash of t is positive. So we can conclude that g of t is increasing function. Implies g of t is going to be greater than 0 or equal to 0 for t belonging to closed 0 to 1 closed. But g of t positive greater than equal to 0 का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं इसे स्टार रिलेशन लिख देती हूँ and this is g of t, I got the sign as positive. So finally I can say that from here I can conclude that star is greater than 0. Star greater than again equal to 0 I can write. So star greater than equal to 0 again indicates that the function capital F of t is increasing function. Correct? This is what I wanted to prove. F of t is increasing implies F of t is going to be greater than equal to 0 for all t that you are considering between 0 to 1. जो भी t आप लेते हो 0 to 1 केस में F of t हमेशा कैसा आ जाता है, greater than equals to 0. If f of t is greater than equals to 0 for all t belonging to 0 to 1, so definitely this result is going to be true. So now we have proved that the result is true with the help of Leibniz theorem and differentiation. So just have a look at this once again, a very beautiful question. Again concepts कैसे इन्होंने इंटरट्वाइन किए हुए, इंटीग्रल कैलकुलस के साथ साथ डिफरेंशियल कैलकुलस की मोनोटोनिसिटी के कॉन्सेप्ट्स भी हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट IIT लव्स। वो ये नहीं चाहता कि आप एक चैप्टर पढ़कर जाएंगे और उसी में से आंसर लिख दें। यस, फ्यू चैप्टर्स आर लाइक दैट कि आपके यहाँ से एक चैप्टर पढ़ा तो उससे सवाल सॉल्व हो जाएगा, बट कैलकुलस में तो आप ये एक्सपेक्ट करो कि दे आर गोइंग टू मर्ज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटीग्रल विद द डिफरेंशियल कैलकुलस एज वेल। ठीक है, होप यू एंजॉयड टुडेज क्वेश्चन, सो डोंट कीप इट टू योरसेल्फ, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड peers, and do not forget to hit the like button and subscribe to our channel. See you in the next video. Till then, take care and bye-bye.